Hello friends and welcome to this video on higher pension under EPS 95. अब तक आई एम श्योर आपने ये टर्म जरूर सुने होंगे। हायर पेंशन, EPS 95, जॉइंट ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वगैरह वगैरह। कुछ एक सर्कुलर भी आ गए हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं, आप जॉइंट ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो ठीक है, पर करना है या नहीं करना है। तो होपफुली इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं इस समय कि इस वीडियो में जो एनालिसिस है वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी अभी 20-25 साल की सर्विस बाकी है, यानी वो जो सुपर एनुएट ऑलरेडी हो चुके हैं या अगले कुछ सालों में होने जा रहे हैं, उनके लिए ये एनालिसिस इज प्रॉब्ली नॉट वेरी रेलेवेंट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। हर मंथ हमारे एम्प्लॉयर हमारी सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए का 12% पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो लेट अस से आवर सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए इज 1 लाख, तो 12,000 is contributed by our employer to PF. Now, one component of this 8.33% ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए है, EPS फॉर शॉर्ट, और जो बैलेंस 3.67% है ये आपके PF अकाउंट EPF में जाता है। सो इफ 1 lakh is your basic NDA, 8,330 rupees is for EPS scheme. तो क्या आज के दिन में ये पैसे EPS फंड में जाते हैं? The answer is no. You see, आज के दिन में बिकॉज ऑफ EPF रूल्स पेंशनेबल सैलरी 15,000 पर मंथ पे कैप्ड। तो आपकी सैलरी इससे ऊपर जो भी हो, इवन इफ योर बेसिक प्लस डीए इज 1,25,000, फॉर EPS 95 कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी महीने की 15,000 ही मानी जाती है और इसका 8.33% आता है 1,250 रुपए, यानी हर महीने 1,250 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन होता है EPS 95 फंड में। तो जो बाकी पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं? बाकी पैसे को आपको EPF अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। दिस इज इन एडिशन टू जो 3.67% है वो तो EPF अकाउंट में जा ही रहा है, एंड EPF अकाउंट में है तो आप उस पर वहां एक इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं जो भी PF की इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से। तो दिस इज हाउ इट इज एट प्रेजेंट। अब अगर हायर पेंशन ऑप्शन आपको मिलती है तो इसका ये मतलब है कि जो 15,000 की कैप है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, आपकी सैलरी पे कोई भी कैप नहीं होगी। तो अगर आपकी बेसिक और डीए मिलाकर 1,25,000 होते हैं तो ईपीएस 95 फंड में इसका 8.33% यानी 10,413 रुपए ये पूरा का पूरा आप ईपीएस 95 फंड में जमा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस हायर कंट्रीब्यूशन को करके आपको फायदा क्या है? तो क्या फायदा होगा आपको हायर कंट्रीब्यूशन करके, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईपीएस 95 के तहत आपको जो पेंशन मिलती है वो होती कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। व्हाट इज पेंशनेबल सैलरी? पेंशनेबल सैलरी है आपकी जो लास्ट 5 इयर्स की है सैलरी उसका एवरेज, एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस पीरियड द कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस फंड शुड हैव बीन डिपॉजिटेड। पेंशनेबल सर्विस क्या है? जितने साल तक ईपीएस 95 फंड में आपकी कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुई, एंड if pensionable service is anything beyond 20 years तो 2 years is just added to that। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए बेसिक प्लस डीए फॉर लास्ट 5 years फॉर मी वाज 2,50,000, लास्ट 5 years बिफोर सुपरएनुएशन, बिफोर पेंशन। तो since for simplicity I'll assume कि it was constant at 2,50,000, so averaged भी 2.5 लाख रुपए ही होंगे। तो पेंशनेबल सैलरी बिकम्स 2.5 लाख, लेकिन आज के दिन में इट इज कैप्ड एट 15,000। तो therefore for 30 years pension under EPS 95 through this formula comes to 6,857 rupees per month, and this is very small, you can almost consider it negligible. If this salary is removed, if this cap is removed, if there is no cap on the pensionable salary, तो now ये जो 2.5 लाख आपकी सैलरी थी, दिस इज व्हाट विल बी यूज्ड फॉर
calculating the pension, and when you plug that figure in this formula, तो आपकी monthly pension आती है करीब 1,14,000 रुपए. So that is a significant jump. But the question is, how do you get from 6,857 to 1,14,000? So this is where the Supreme Court judgment dated 4 November 2022 comes in. ये judgment के बाद जो cap है pensionable salary पे, that is being removed. तो employees अगर वो चाहें तो जो भी उनकी actual basic plus DA है उस पे पूरा का पूरा 8.33% वो EPS 95 फंड में contribute कर सकते हैं beyond 15,000 limit. तो let us say your salary is 1,25,000, 8.33% of this 10,430, you can contribute this entire amount to EPS 95 fund. And since you are contributing on your actual salary to the EPS fund, the pension जो आपको मिलेगी वो भी आपकी actual salary पर ही होगी. तो क्या ये सभी के लिए applicable है? Well, almost सभी के लिए applicable है, except वो जो कि 1 सितंबर 2014 के पहले ही retire हो गए without exercising any option for higher pension, and those जो 1 सितंबर 2014 के बाद join कर रहे हैं to the fund, and if their basic plus DA on that date was beyond 15,000. So except these two categories, this is applicable to everybody. So what happens if you choose the higher pension option? जैसे कि हमने पहले कहा था कि अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो 8.33% of your basic plus DA will be deposited to EPS 95 fund every month. लेकिन we are in 2023 already, and you might have been contributing to EPS 95 fund for maybe 10-20 years, जैसे कि I have been contributing since 2012, and in the past I have only contributed 1,250 rupees. तो उस पीरियड का क्या होगा? जो भी एक्सेस कंट्रीब्यूशन था वो सारा पीएफ फंड में जा रहा था. तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पीएफ फंड में गया था पीएफ अकाउंट में एंड जिस पे मैंने इंटरेस्ट अर्न किया था, वो सारा का सारा एक्सेस कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द इंटरेस्ट विल हैव टू बी रीडाइवर्टेड टू ईपीएस 95 फंड. जैसे इस एग्जांपल में से पास्ट पीरियड में whatever was my salary, it was capped at 15,000 for calculation, and I was only contributing 1,250 rupees. The balance 9,163 rupees was being diverted to PF fund, PF account. So I was also earning an interest there. All of that contribution and all of that interest will have to be rediverted to EPS 95 fund. So that brings us to the all important question, higher pension option exercise करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Now हमने already discuss किया है कि अगर आप higher pension option choose करते हैं तो 8.33% आपके basic DA का हर महीने EPS 95 फंड में जमा किया जाएगा. उसी तरह यही contribution 8.33% past period के लिए जो अभी PF अकाउंट में है इंटरेस्ट के साथ EPS 95 फंड में जमा किया जाएगा. The question is, how much does this amount to? So let us calculate these two components separately. तो past period के contribution along with interest, इस calculation को करने के लिए follow these steps 1 to 5. Now I have not discussed the details of calculation in this video. You can refer to the Excel for that, and in case you would like me to make a video for that, do let me know. The following steps 1 to 5 जब मैं past period contribution calculate करता हूँ तो I have been contributing to the EPS fund from October 2012 and we are doing the calculation till December 2022. So for this period the total contribution was 5.77 lakh rupees, and this is not the total PF contribution, it was the excess contribution of EPS 95 fund जो कि पीएफ में डाइवर्ट किया जा रहा था. मतलब 1250 रुपए के ऊपर जो भी 8.33% होता है
ये उतना component ही है. And on this contribution, since I earned interest at the PF rates over the past 10 years or so, so including that interest, as on 28th February, this amount has come up to around 8.27 lakh rupees. So if I choose the higher pension option, तो ये जो 8.27 lakh rupees है, this will be deposited to EPS95 fund after taking it out from my PF account. And I will obviously not earn any further interest on this sum. तो ये तो था past period contributions के बारे में. Now, अब estimate करते हैं ये जो second component है 8.33% of basic and DA अभी से superannuation तक या 58 years तक वो कितना होगा. Now, since this is a projection about the future, so we'll have to make a few assumptions and I'll discuss them as we go along. So let us assume आज के दिन में मेरा current basic और DA मिला के है 1,25,000 and I am due for superannuation in 2044. So 8.33% of basic and DA from today, that is 2023 till 2042 will be deposited into the EPS95 fund each month. And obviously मैं इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करूंगा. अब हम दो सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे. पहले सिनेरियो में हम ये अज्यूम करेंगे कि बेसिक और डीए जो है मेरा वो हर साल 3% से बढ़ते जाएगा. एंड दूसरे सिनेरियो में हम ये अज्यूम करेंगे कि बेसिक और डीए हर साल 3% से बढ़ेगा एंड इस 2023 से 2042 का जो पीरियड है इस बीच दो बार ये 12-12% से बढ़ेगा. ये 12-12% क्यों? एक पे रिवीजन का जो इम्पैक्ट है उसको लेकर के. तो इन दोनों सिनेरियो में रफली 30-31 lakhs is the contribution into EPS95 fund. अब आप सोच सकते हैं कि जो 3% इंक्रीमेंट मैंने लिया है ईयरली, this appears to be on somewhat the lower side and I would like to be a little conservative here, but we'll address this point again. लेकिन अभी देखते हैं कि ये आता क्या है. तो in two parts we have calculated कि EPS95 fund में roughly what is the amount that we are depositing, and we found कि past period का we are depositing about 8.27 lakhs, अभी से 2042 तक around 30-31 lakhs, and obviously we are not earning any interest on this. So if I have made this excess contribution, what am I getting in return? So the two scenarios which we considered, in scenario 1 if you plug in the values in the formula, तो monthly करीब 94,000 pension आती है, and in scenario 2 the monthly pension comes to something like 1.11 lakh rupees. अगर हमने ये हायर पेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया होता तो क्या होता? सबसे पहले जो 8.27 लाख है 2012 से 2022 तक के पीरियड का कंट्रीब्यूशन वो ईपीएफ अकाउंट में ही रहता, एंड as it has been earning interest so far, it will continue to earn that interest up to 2044, not 2042. And you can refer to the Excel for this calculation. By 2044, ये जो 8.27 lakhs है, with interest, this will amount to 47.16 lakh rupees. And of course, there's an important assumption here. I'm assuming कि जो PF interest rate है, वो constant 8% रहता है from now on to 2044. उसी तरह आगे के पीरियड का हर मंथ का बेसिक प्लस डीए का 8.33%, only 1,250 rupees will be going to EPS95 fund. The rest of it will again be diverted to PF account, and this will also earn an interest till 2044. So by the end of 2044, the two scenarios which we considered previously, scenario 1 में ये 8.33% का जो कंपोनेंट है इसके एवज में अराउंड 80 lakhs accumulate होगा, और सिनेरियो 2 में around 85 lakhs, and let us assume the lower figure 80 lakhs. So combining 80 lakhs for the period from 2023 onwards
and 47 lakhs for the past period. If I do not choose the higher pension option, so I receive or I am left with an extra corpus of about 1.28 crores in 2044. Of course, in this situation, the EPS95 pension which I'll get is practically negligible. तो अब एक तरफ I have a monthly pension of at least 1 lakh rupees if I choose the higher pension option, and if I don't choose the higher pension option, I have negligible pension but I have an extra corpus of about 1.25 crores. अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करें? So for a like to like comparison, let us convert this 1.25 crores to a monthly payout system, or that is where we need to look at annuity plans. Annuity plans कई तरह के हैं बाजार में available. For calculation, I am using this calculator by ICICI Prudential, and you have a variety of options available. You can choose immediate annuity जिसमें आपको परचेज के तुरंत बाद monthly annuity payment start हो सकती है, या you can defer it by a few years, 3, 4, 5, 6 and so on. आप annuity payments choose कर सकते हैं for self and spouse till either person is alive, and then you can choose कि जो भी corpus है वो आपके nominees को वापस मिल जाए. And you can also choose annuity payment की frequency. It could be monthly, quarterly, yearly and so on. So let me first choose an immediate annuity plan जिसमें कि monthly payments are given to either me or my spouse, and then the corpus is returned to my nominees. तो इस case में monthly annuity payments are about 60,800 rupees. What if I choose to defer my payment for a few years, let us say 3 years? Again, with 1.25 crores, I'm choosing the option key the pension is given to me, my spouse, and the corpus returned to our nominees. The monthly payout comes to around 71,000. So this slide just summarizes the discussion so far. अगर 1.25 crores आप annuity plan में invest करते हैं by not exercising the higher pension option, so you get an annuity of around 60 to 71,000 till either of you or your spouse is alive, and after both of you this amount is returned to your nominees. तो अब आपके सामने दो विकल्प हैं. हायर पेंशन अगर आप लेते हैं ऑप्शन, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी जब तक आप जीवित हैं, एंड आपके बाद आपके स्पाउस को भी इसका आधा लगभग 55,000 पेंशन हर महीने मिलेगी. एंड अगर आप ये ऑप्शन नहीं लेते हैं तो करीब 71,000 पेंशन आप या आपके स्पाउस जब तक हैं उनको मिलेगी, और करीब 1 करोड़ का कॉर्पस आपके नॉमिनीज को वापस किया जाएगा आप दोनों के बाद. मैंने 1 करोड़ यहाँ लिखा है, नॉट 1.25 करोड़, क्योंकि देयर इज अ टैक्स डिडक्शन इन्वॉल्व्ड हियर. तो अब हायर पेंशन ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है? डिसीजन आपका है, बट लेट मी लीव यू विद अ फ्यू इनपुट्स. जैसे कि हमने प्रीवियसली कहा था कि ये जो ईयरली 3% का हम इंक्रीमेंट मान रहे हैं, दिस अपीयर्स टू बी अ लिटिल ऑन द लोअर साइड. आफ्टर ऑल, अगर मैं 2012 से 2022 तक का एनुअल ग्रोथ कंसिडर करूं ऑन एन एवरेज, तो इट्स 5.5%. ठीक है, तो इफ वी कंसिडर, लेट अस से कि अभी से 2042 तक 6% ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं, 2042 या 2044 तक. Now remember, this can be even higher than this key, because there can be the impact of pay revisions involved. But what happens if we consider it to be 6%? So in this case, the EPF corpus from 2012 to 2044 would be 1.53 crores. Again, this is the excess EPF corpus of EPS contribution. It's not the total EPF corpus. And against this, if I purchase a 3-year deferred monthly annuity, so I get an 87,000 rupees monthly annuity. And in this scenario, जो EPS95 pension मुझे मिलती है, that is around 1.54 lakh rupees per month.
तो द कंक्लूजन इज कि ईपीएस 95 पेंशन जो है फॉर सेल्फ इज नियरली डबल, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो रिटर्न ऑफ कॉर्पस इन्वॉल्व्ड इन दैट केस। एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू डिसाइड टू रिटायर अ लिटिल अर्ली, लेट अस से एट 54 इयर्स ऑफ एज। तो एक चीज यहाँ ये समझनी है कि 58 के पहले फॉर एवरी ईयर if you choose to exit and receive pension, so for every year your pension reduces by 4%. So let us say you decide कि at 54 you exit this and start your pension, so it would reduce by a factor of 16%. Now again you can refer to the calculations. इस केस में जो ईपीएफ कॉर्पस आता है that is 1.17 crores, leading to a monthly annuity of 66,000. The EPS pension, because it has reduced, is now 68,000 per month. So, in this particular scenario, if you retire a little early, the EPS 95 pension is nearly equal. And of course, even in this scenario, there's no return of corpus involved. And finally, कुछ और pros and cons देख लेते हैं। पीएफ कॉर्पस अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं हायर पेंशन नहीं चूज करके, so there is an option to avail the return of corpus, not just to your nominees, but also in case of some critical illnesses and permanent disability. Now remember, इस scenario में there's no concept of reduction of annuity. But अगर EPS pension में आप widow pension की बात करते हैं, तो it is only 50% of the employee pension. And child pension, let us say जो nominees हैं आपके, their children, child pension is only admissible till they attain the age of 25. Whereas if you choose to purchase an annuity, you can return the entire corpus to them. So that is one point of difference. Then EPS pension reduces by 4% for each year before 58, and below 50 there is no pension admissible. आप सिर्फ जो आपका contribution है उसको withdraw कर सकते हैं। EPF में there is an early exit from EPF. It allows withdrawal of corpus. Of course not fully, but it does allow it. एक और सिचुएशन ये सोचिए कि our current employer is contributing PF contribution on the salary above 15,000, but it is entirely voluntary. What if you choose your employment? What if your employer changes, जो भी है, and the new employer does not contribute on salary above 15,000? एंड फाइनली एक और चीज कि ईपीएस स्कीम की सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत सारे डाउट्स उठाए जा रहे हैं। एंड ये इसलिए है क्योंकि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा पेंशन उस पर डिपेंड नहीं करता, मेरे कंट्रीब्यूशन से उसका कोई लिंक नहीं है। माय पेंशन वुड डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन बाय फ्यूचर ईपीएस contributors. So hopefully we'll discuss more about that in a future video. But for now, let us say कि defined benefit schemes जितनी भी होती है, उनमें ये इशू हमेशा रहता है। So friends, that was it from my end. Please do not make any decision on the basis of this video alone. ये बस एक attempt था to analyze certain factors which are relevant in deciding कि हमें higher pension opt करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Please make your own calculations. Any feedback or any comments or any queries, you can mail them to me, call me, WhatsApp me, whatever. The details are on your screen. Thank you so much for watching. Have a good day.